All right, so the recording has started. Okay, so I was talking about we have already started chapter number fifth, that is linear equations in two variables, right? So we have seen how we can solve equations. So we have two methods. That is, first one is elimination method, and the second one is substitution method. मान लीजिए कि we have two equations, right? So x and y के form में वो equations रहेंगे दोनों. There will be two variables, and we will be having two equations. सो उन इक्वेशंस को सॉल्व करना यानी कि क्या कि देयर वुड बी अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x एंड y, so we have to find out that value. So we have seen two methods. Which one? First one is elimination method, second one is substitution method. So we have to understand, मतलब जब हमें बोला जाए कि solve this equation, so it is not necessary कि मतलब बताया बताया हो कि you have to solve this equation with this method or with that method. So depending upon the equation, we have to decide which method will be useful for us. Okay, मतलब मान लीजिए कि इक्वेशन कुछ इस तरीके का है कि उसमें से दोनों में से कोई एक वेरिएबल इलिमिनेट हो सकता है. सो इन दैट केस वी विल गो फॉर एलिमिनेशन मेथड. ओके, और कुछ इक्वेशन अगर हमें कॉम्प्लेक्स दिखता है, ऐसा लगता है कि कोई इसमें से कोई भी वेरिएबल इलिमिनेट नहीं हो सकता, सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो एलिमिनेशन मेथड में तो किसी को डाउट नहीं रहेगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. प्लीज टेल मी, do you have any doubt in substitution method? I hope we have taken enough number of examples, and this method is clear to you. If you have any kind of doubt in this method, substitution method I'm talking about, okay, so can you repeat? All right, no problem, I will repeat the method once. I will take one example for that, right? Chalo. So I was planning to start this word problems thing, but since this method is not clear to you and it is very important, I will take one example of elimination method. Okay. So now let us suppose I have to solve the following set of simultaneous equations. So these equations can be solved with the help of any method. Elimination method से भी हो सकता है और substitution method से भी हो सकता है. So we will see first one. Okay. सो मान लीजिए कि फर्स्ट वन को हमें सॉल्व करना है नाउ विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. सो इन दिस केस, डू यू कैन यू लाइक थिंक हाउ कैन बी एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल? सो मान लो अगर फर्स्ट इक्वेशन को इफ वी मल्टीप्लाई बाय 5, राइट? सो देखो, फर्स्ट इक्वेशन को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट वुड बिकम 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4 5 जार 20, राइट? और सेकंड इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख देता हूं 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1. सो जब हम इनको ऐड करेंगे, सो 5y से 5y कट जाएगा, 7x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 21 एंड x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3, राइट? सो अगर x इज इक्वल्स टू 3 की वैल्यू आप यहां पे रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आनी है? y की वैल्यू आएगी 1. सो दिस वाज elimination method, which is I hope clear to you. मतलब आपको ये मेथड आसान जाती है and you know about it, right? Yes, great. What about others, Vedant and Ayush? Are you not in the class? You're not replying. Okay, so you keep replying, keep posting your replies. All right. Okay, now I got your replies. Great. सो ये थी हमारी एलिमिनेशन मेथड. इसमें हमने क्या किया? y को एलिमिनेट किया. ऑलराइट. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है? नाउ सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम वी सब्स्टिट्यूट एन वेरिएबल. नाउ व्हाट डज दैट मीन? सी, यहाँ पे x plus y is equals to 4 हमें दिया है. So let us suppose we have to substitute the value of y. So can I write this as y is equals to 4 minus x? See, इस x को मैंने इस साइड ले गया मैं तो 4 से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? सो y is equals to 4 minus x will be the equation or will be the new equation we have. Clear till this? मतलब हम क्या कर रहे हैं? y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. Now we have got one value of y using the first equation, so we have to substitute this value of y in second equation. How? See,
2x, अभी 2x को मैंने 2x लिख दिया, माइनस 5 को मैंने 5 लिख दिया, y की जगह पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग y आई विल राइट 4 माइनस x is equals to 1. Everything is same, but the thing is we are substituting y here. So that is why it is called as substitution method. Okay, so now if we solve further, see what happens. 2x will remain as 2x minus 5 into 4 will become minus 20. Minus 5 into 4 will become minus 20, and minus 5 into minus x will become plus 5x is equals to 1. So 2x plus 5x is 7x, and this 20 goes to right side, it becomes positive. 1 plus 20 is 21. So 7x is equals to 21, यानी कि x is equals to 3. So we have similar answer. मतलब पहले इसमें भी हमारा x is equals to 3 आया था, दूसरी मेथड से जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू, तब भी x की वैल्यू x ही आएगी. दैट मीन्स वी हैव फॉलोड करेक्ट प्रोसेस. नाउ एनी डाउट किसी भी एग्जांपल में? अभी मान लीजिए इट इज नॉट नेसेसरी, सी मतलब पहले ही इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इट इज नॉट नेसेसरी. सो आप कह सकते हैं कि सर व्हाट इफ आई वांट टू सब्स्टिट्यूट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, मतलब सेकंड इक्वेशन से मैं वैल्यू लूंगा या फिर लूंगी, एंड देन आई विल पुट इट इनटू फर्स्ट इक्वेशन 1. सो वी विल ट्राई दैट आल्सो. ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंस. ओके, सो देखो इसको मॉडिफाई करना है, तो कैसे मॉडिफाई करूंगा मैं? यहाँ पे पहले हमने y को सब्स्टिट्यूट किया, अभी मैं x को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ. सो कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5y, है ना? 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 5y लिख सकता हूँ. सो x विल बी इक्वल टू 1 प्लस 5y बाई 2. ठीक है, x की वैल्यू ये आती है. ऑल राइट, सो अभी x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की किस इक्वेशन की मदद से? सेकेंड इक्वेशन की मदद से. सो कैन आई पुट दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन? नो, आई कैन नॉट. आई हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. मतलब जहां से हमने वैल्यू डिराइव की उस इक्वेशन में हम वैल्यू नहीं रखेंगे, हम वैल्यू रखेंगे दूसरे इक्वेशन में. ओके, सो x की वैल्यू रख दो. ये x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे तो 1 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 4 आया. राइट, सो इसको अगर हम सॉल्व करते जाए तो व्हाट विल बिकम? सी 1 प्लस 5y प्लस 2y बाई 2 इज इक्वल्स टू 4. यहाँ पे मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल कर लिया. राइट, 2y बाई 2 इज अगेन इक्वल टू y ओनली. सो देखो क्या होता है. सी 5y plus 2y is equals to 7y. That means 1 plus 7y is equals to how much? 8. 2 fours are 8, right? 2 goes to the right side and it multiplies with 4. So 1 plus 7y is equals to 8, and 7y will be equal to 8 minus 1. So this one again goes here. So 7y is equals to 7. Y is equals to 7 by 7. That is y is equals to 1. तो पहले भी हमारा यही आया था. राइट, सो वी कैन पुट एनीथिंग, मतलब आप किसी भी इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि पहले इक्वेशन में से y ही सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे इक्वेशन में से. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, but the thing is you have to follow all the mathematical rules or the process correctly. ओके, सो देखो मैंने एक ही इक्वेशन को तीन चार तरीके से सॉल्व किया, बट स्टिल आई एम गेटिंग द करेक्ट वैल्यू और द सेम वैल्यू. राइट, सो दिस इज द व्हाट वी कैन से, दिस इज द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स. मतलब आप किसी भी तरीके से जाओ, इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस करेक्टली, you will land up on the same answer or the similar answer. ओके, सो अभी किसी को डाउट इन दो मेथड में से किसी भी मेथड में? इवन इफ यू हैव स्मॉलेस्ट डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, वी हैव टाइम, वी कैन क्लैरिफाई दैट डाउट. अगर किसी को डाउट है, so you can ask by turning on your mic. I always encourage you to turn on your mic. If you are not comfortable, you can put in the chat box, and if you are clear with everything, just put in the chat box. That's a we are clear or clear, no doubt. All right, perfect. What about others, remaining people? Ayush and okay, no doubt. Great. See, why I'm telling you, see, अगर आपको इन दो मेथड में डाउट है
सो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग जो वर्ड प्रॉब्लम्स है. दिस इज अ नेक्स्ट लेवल. मतलब ये अगर आपका पक्का है, परफेक्ट है, यू हैव टू इक्वेशंस एंड यू कैन सॉल्व देम कॉन्फिडेंटली, सो देन एंड देन यू कैन सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में एक हमें एडिशनल चीज भी सीखना होता है, वो मैं बता दूंगा आपको व्हाट इज दैट. ठीक है. So since I have got reply from you, guys, that is you don't have any doubt, we can move further, right? All right. So let's go further. Oh, sorry. It is 4.5. Actually, we are on 5.2 maybe. Sorry. These things happen sometime. Okay. So our today's topic is word problems based on simultaneous equation. So while solving word problems, converting the given information into mathematical form is an important step in this process. In the following flowchart, the procedure for finding solution of word problems is given. So word problems means what? Exactly what? Now you must be knowing कि मैथमेटिक्स में या फिर किसी भी चीज में, मान लीजिए हमारे जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक लैंग्वेजेस हुआ या फिर साइंस हुआ या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजें हमें सिखाई जाती है इन आवर स्कूल बिकॉज ऑफ अ पर्पस. मतलब उनका लाइफ में कुछ तो यूज रहेगा, राइट? सो उसी वजह से वो हमें सिखाई जाती है चीजें. इवन दो आपको कभी कभी लगता है कि दिस पार्ट इज नॉट यूजफुल, मतलब मैथमेटिक्स में हमें ये क्यों पढ़ाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ये बहुत मुश्किल पार्ट्स है. But why do the teachers, or why it is in our syllabus? But that the thing is in your syllabus because of a reason. तो इसका लाइफ में कुछ ना कुछ इस्तेमाल है हर एक चीज का जो आप सीख रहे हो. दैट इज व्हाई इट इज इन योर बुक एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज रियल एजुकेशन. ओके. मतलब हम जो भी सीख रहे हैं, वी शुड बी एबल टू अप्लाई दैट थिंग, राइट? सो अभी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस सीखे, लेकिन हाउ कैन वी यूटिलाइज दीज इक्वेशन, और हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस नॉलेज? मतलब हमने सीख तो लिया कि सब्स्टिट्यूट करना है, एलिमिनेट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई. बट why do we have to do that? मतलब क्यों करना है अगर इसका कोई यूज नहीं है? सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे हम उसे यूज करते हैं. ओके. सो मान लीजिए कि आपको एक सिनारियो दिया जाता है या फिर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि लाइक सी, देख ही लेते हैं हम, हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं. दिस इज गिवन इन द लेफ्ट फ्लो चार्ट एंड एग्जांपल्स आर गिवन इन द राइट फ्लो चार्ट. ओके. सो एग्जांपल पहले हम देखते हैं. सम ऑफ टू नंबर्स इज 36. इफ 9 is subtracted from if 9 is subtracted from 8 times the first number, we got the second number, find the numbers. Okay, so this is not actually a real life example, but it is kind of a word problem, right? So pehla statement kya hai? See, first thing we have to do is we have to read the given word problem carefully and try to understand it. Okay, so thoda sa complicated lagta hai. See, sum of two numbers is 36. If 9 is subtracted from 8 times the first number, we get second number. uh, Find the numbers. Okay, so देखो, अभी हमें ये प्रॉब्लम हमने पढ़ लिया, तो इसको हमें समझना है एंड वी हैव टू ट्राई एंड मेक equations based on this given problem. How can we do that? Now sum of two numbers is 36. This is our first statement. So always remember first statement और first two statements, मतलब जो पहला सेंटेंस रहेगा या फिर पहले दो सेंटेंस रहेंगे, they will give us variables as well as one equation. ओके. तो यहाँ पे देखो, पहले ही सेंटेंस में हमें क्या मिला है, वेरिएबल्स भी मिले हैं एंड पहला इक्वेशन भी मिला है. कैसे? सम ऑफ टू नंबर्स इज 36. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, टू नंबर्स आर देयर.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। मैं पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूं, तो इसमें हमें बोला है कि देयर आर टू नंबर्स, फर्स्ट थिंग इज टू नंबर्स, सो लेट अस कंसिडर दोस टू नंबर्स एज x एंड y। क्लियर? मान लो कि वो दो जो नंबर है वो क्या है, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। तो नाउ राइट डाउन द इक्वेशन, आप इक्वेशन लिखो। सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो दो नंबर है वो x एंड y है। सो हाउ कैन वी राइट द फर्स्ट इक्वेशन? कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स? इट इज वेरी सिंपल। Sum of two numbers is 36 and two numbers are x and y. So can I write like this? X plus y is equals to 36, राइट ना? मेरे पास दो नंबर्स है जिनका की सम है 36। सो x plus y is equals to 36। सो सी, पहले एग्जांपल में हमें, पहले सेंटेंस में हमें क्या मिला? वेरिएबल्स मिले एंड एक इक्वेशन भी मिला। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। फॉर्म द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फ्रॉम अबव वेरिएबल्स। सो जैसे कि हमें बोला था सम ऑफ that those two numbers is 36, that's why we have written x plus y is equals to 36। very good kadambari। okay, now since we are learning equations in two variables, right? दो variables में equations है, so we know that in order to solve that equation we need to have two equations। मतलब एक equation से काम नहीं चलेगा। I have repeated this thing many times, right? अगर दो variables है तो we need two equations, तीन variables है तो we need three equations, like that। okay, अगर एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से भी काम चल जाता है। नाउ हाफ ऑफ द वर्क इज डन, मतलब हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है आयुष एंड वेदांत? इट इज x plus y is equals to 36। ये पहला इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया है। नाउ वी हैव टू फॉर्म सेकंड इक्वेशन। इफ 9 is subtracted from 8 times the first number। नाउ अभी मान लो कोई भी फर्स्ट नंबर है, कोई भी सेकंड नंबर है, तो यहां पे हमने मान लिया फर्स्ट नंबर क्या था? x था। ओके, सो या 8 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। सी, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। तो 8 टाइम फर्स्ट नंबर क्या रहेगा? 8x रहेगा एंड सब्ट्रैक्टेड बाय 9। मतलब अभी उस 8x में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, so it will become 8x minus 9। so then we get the second number। मतलब 8x में से जब हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे then we will have y। so we have second equation, right? 8x minus 9 is equals to y। so now we have two equations। which equations? x plus y is equals to 36, ये पहला इक्वेशन है, और 8x minus 9 is equals to y ये सेकंड इक्वेशन है। लेकिन इफ यू सी, सेकंड इक्वेशन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? सी, इसको हमें क्या करना है? अभी ये जो इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, सो इसको हमें प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब मैं क्या करूंगा, 8x को एज इट इज रखूंगा, इस y को यहाँ पे ले आऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस y, और इस 9 को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस 9। सो 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में बन गया। ये पहला इक्वेशन तो था ही। ओके, सो विच मेथड इज फीजिबल हियर? मतलब कौन सा मेथड इजी जाएगा? सो द मेथड फीजिबल और द मेथड इजी हियर इज एलिमिनेशन मेथड। बिकॉज सी, हमारे पास वाई वाई है, अगर हम सिंपली वो दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे कर देंगे तो वाई ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी, तो ये वाई वाई कैंसिल आउट हो गया। सो x प्लस 8x इज 9x, 36 प्लस 9 इज 45, x इज इक्वल्स टू 5। अभी x इज इक्वल्स टू 5 हमें एक वैल्यू मिल गई। नाउ यू कैन पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन दिस इक्वेशन और इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 31। Now I hope this looks a bit complicated, but it is not। x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, क्या किया हमने यहाँ पे? एक्स्ट्रा स्टेप क्या किया स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। अभी ये एलिमिनेशन मेथड तो हम सीख ही चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमें आता है। सो व्हाट वाज द एक्स्ट्रा स्टेप दैट वी हैव डन इन दिस एग्जांपल, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट वाज दैट? कैन यू टेल?
See, apart from yeah, finding y, it is a part of job we were already doing, right? मतलब हमने पहले भी x की वैल्यू फाइंड आउट की है, y की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने। अगर हमें दो इक्वेशंस मिलते हैं, so we can solve that and we have done that, but what we are doing here is we are forming our own equations by the मतलब with the help of given problem। जो प्रॉब्लम दिया है उसकी मदद से हम इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं। दैट इज द एक्स्ट्रा पार्ट वी आर डूइंग, समझ रहे हो? तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर फॉर्मिंग इक्वेशंस करेक्टली एंड देन सॉल्विंग देम करेक्टली, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट? सो अभी ये जो दो इक्वेशंस हैं, सॉरी ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया था, तो वी विल ट्राई टू सी वेदर दीज वैल्यू जस्टिफाई दैट। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। तो जो हमारे दो नंबर्स आए हैं 5 और 31, क्या क्या इनकी सम 36 है? इज इट 36? ऑब्वियसली इट इज। 5 प्लस 31 इज 36। मतलब पहला जो सेंटेंस था वो सेटिस्फाई हो गया। Now what was the second statement? Second statement था कि 8 times the first number, 8 times the first number कीजिए, क्या है? फर्स्ट नंबर हमारा था x, मतलब हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 5 है। तो 8 times 5 is 40, राइट? 40 में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट सेकंड नंबर, ऐसा हमें बोला गया था एग्जांपल में, राइट? सो 40 में से अगर हम 31 सब्ट्रैक्ट करते 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 31 दैट इज आवर सेकंड नंबर। मतलब हमारा जो वैल्यू, हमारे जो दो वैल्यूज आए आए हैं x and y के, so these two values satisfy our equations, all right? So that's why we can say that we have found correct values। I hope you get this, okay? So this is a very simple thing। now वर्ड प्रॉब्लम्स में किस टाइप के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं? नाउ we will see various types of word problems। it may be related to age, numbers, fractions, money transactions, geometrical properties, or problem may be based on speed, distance and time। they may vary, okay, but the funda is, or the fundamental thing is same। what is that? we have word problem, we are going to convert them into equation and then we are going to solve those equations। that is it, okay? so अभी यहाँ पे एक solved example हमें दिया है। so I will not show you the answer, you have to try and find out the equations, okay? so see, sum of two numbers is, first thing is we have to read the question completely, okay? first thing is we have to read the question completely, we don't have to hurry। see, sum of two numbers is 103 or 103। if greater number is divided by smaller number, then the quotient is 2 and the remainder is 19, then find the numbers। this looks a bit complicated but it is not। see, sum of two numbers is 103, can you form the first equation? Can you form the first equation? It is very simple। sum of two numbers is 103, we have already done। yeah, exactly, it is x plus y is equals to 103 or 103। now एक इक्वेशन तो हमें मिल गया। now what is our next thing और next job क्या है हमारा? we have to form सेकेंड इक्वेशन। अभी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए यहाँ पे कितना सारा कॉम्प्लिकेशन दिया है। if the greater number is divided by smaller number, then the quotient is 2 and remainder is 19। okay, so just a second। see, टू फॉर्म सेकेंड इक्वेशन, अगर सेकेंड इक्वेशन हमें फॉर्म करना है तो हमें एक बेसिक जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए? कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो यू हैव सीन दिस फॉर्मूला ऑलरेडी, राइट? तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, सो इन दिस केस यू कैन सिंपली फॉर्म द सेकेंड इक्वेशन। तो कैसे? सी, पहला इक्वेशन तो हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 103 बाय डिवाइडिंग ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, क्वोशिएंट इज 2 and remainder is 19। तो सी,
मान लो कि हमारा जो बिगर नंबर है, okay, so bigger number is, let us suppose, x, and the smaller number is y. So x को अगर हम y से डिवाइड करते हैं, so we have quotient as 2 and remainder as 19. ओके, सो इस फॉर्मूला में हमें सब चीजें रखनी है. सो व्हाट इज डिवाइडेंड? डिवाइडेंड इज x, तो मैंने यहाँ पे x रख दिया डिवाइडेंड की जगह पे. डिवाइजर क्या है हमारा? डिवाइजर है y, तो मैंने यहाँ पे y रख दिया. क्वोशंट क्या था? इट इज 2, एंड रिमाइंडर क्या था? इट इज 19. So this is how I have put all the values, and see what I get. X minus 2y is equals to 19. So x minus 2y is equals to 19 is my second equation. X plus y is equals to 103 is my first equation. This is first, this is second equation. So we have two equations, we can solve them now. तो मुझे बताओ यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन हमने फॉर्म किया, डू यू हैव एनी डाउट कि सही किस तरीके से फॉर्म हुआ, और इज इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड? कैन यू प्लीज रिपीट इट? ऐसा कुछ है? अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो मैं आई कैन रिपीट इट. ओके, समझ में आया एवरीवन? नो डाउट, क्लियर. तो हमारे पास दो इक्वेशंस है. नाउ यू कैन यूज एनी मेथड, बट इफ आई वुड बी इन योर प्लेस, आई वुड हैव यूज्ड व्हिच मेथड? एलिमिनेशन मेथड. तो कैसे एलिमिनेट करते हैं? सी, अगर मान लो सेकंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, सब्ट्रैक्शन कर लेते, राइट? सो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2y हो जाएगा, और ये माइनस 19 हो जाएगा. एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा. 2y प्लस y इज 3y, एंड 103 माइनस 19 विल बी how much? 84 something, right? Is it 84 only? Yeah, it's 84 only. So y will be equal to 84 by 3, and the value of y is 24. Or is it what? 28. Yeah, it's 28. y की वैल्यू 28 आई, तो ये y की जो वैल्यू है, यू कैन पुट इट हियर और हियर, एंड देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. सो x और y की वैल्यू मिल गई. दैट्स इट, वी आर डन विद द एग्जांपल. Okay, so the main thing is we need to understand how can we form the equations. That is the uh, yeah, sir, I have a doubt. Yeah, please go ahead, Kadambar. You can turn on your mic, or you can just type in the chat box. Yeah, please go ahead. Kadambari, I would say you turn on your mic so that it is okay. अगर आप कुछ बोलने में गलती भी करते हो, so that is not the problem. Okay, but it saves the time, nothing else. Sir, Yeah. why we add equations in solved example? Why we add equations in the solved example? कहाँ पे ऐड किया है यहाँ पे इक्वेशन हमने? यहाँ पे बोल रहे हो ना, this one? No steps and examples, sir. Sorry, please repeat. 86 page number. पेज नंबर 86. ओके, या, हाँ. तो कहाँ पे ऐड किया है हमने? यहाँ पे ना. Yes. ओके, सो योर डाउट इज कि सर हमने इस इक्वेशन में ऐड किया, सॉरी, इस एग्जांपल में ऐड किया है, और इस एग्जांपल में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट इज योर डाउट, राइट? व्हाई इट इज सो? मतलब एक तो ऐड ही होना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्ट ही होना चाहिए, राइट कादम्बरी? इज इट योर डाउट? Yes, sir. ओके, फाइन. सो सी, वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड. मतलब ये जो डाउट है, ये अगर आपके साथ में रहता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, सो आपने पूछ लिया, दैट इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट. सो सी, जब हम इलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, आई होप आप समझ रहे हो कि इलिमिनेशन मेथड यानी कि क्या. मैं बात कर रहा हूं आइदर एक्स और वाई हमें इलिमिनेट करना है. ओके, सो एलिमिनेशन मेथड में ऐसा कोई फिक्स चीज नहीं है कि whether you should add or you should subtract. You have to choose. मतलब आपको डिसाइड करना है कि what is feasible for you. For example, now let us suppose, see,
मेरे पास इक्वेशंस है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 64। ये मेरे पास दो एग्जांपल्स है कादम्बरी। ओके, सो इन दो एग्जांपल्स में से विच मेथड, मतलब आप मुझे बताना कि क्या मैं ऐड करूं तो बेटर रहेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो बेटर रहेगा। मुझे क्या करना है, आइदर एक्स और वाई को एलिमिनेट करना है, आइदर एक्स और वाई को एलिमिनेट करना है। सो मैं अगर यहाँ पे मतलब आपकी जगह पे हूं तो आई विल ऐड देम। सो ऐड करने से क्या होगा, तो ये y के साथ y कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, और 36 प्लस 64 100 आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 50। राइट, सो दिस इज द सिंपलर मेथड आई थॉट। नाउ मान लो कि मेरे पास इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, let us suppose 75. Okay, I'm taking just random numbers, and I have x plus y is equals to 3। ठीक है, ये दो इक्वेशन है मेरे पास। तो अभी क्या करना है, अगर आप हाँ यहाँ पे ऐड करते हो, ऐड करोगे तो क्या होगा, 6x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 78 आ जाएगा, विच इज नॉट फीजिबल। सब ट्रैक करोगे तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सेकंड इक्वेशन में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, या फिर मैं पहले इक्वेशन भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। कैसे, देखो, पहला इक्वेशन तो मैं एज इट इज लिखूंगा, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75, मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी मैं इस इक्वेशन में मॉडिफाई करूंगा, तो यू हैव टू डिसाइड विच वन यू वांट टू एलिमिनेट। मान लीजिए कि हमें एलिमिनेट करना है 5, सॉरी एक्स एलिमिनेट करना है, तो एक्स एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 3 15, मतलब मैंने इस कंप्लीट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अभी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में साइन चेंज होता है। अभी 5x के साथ में 5x सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y माइनस 5y आ जाएगा माइनस 2y, एंड 75 माइनस 15 आ जाएगा पॉजिटिव 60। सो y विल बी इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो इस तरीके से सी, पहले इसमें मैंने ऐड किया क्योंकि वहां पे ऐड करने से मेरा सिंपली वाई वाई कैंसिल आउट हो रहा था। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से वो इलिमिनेट होगा। इलिमिनेशन मेथड में यही होता है। ओके, सो आई वुड रिकमेंड यू, ऑल ऑफ यू, आप तीनों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि टुडे योर होमवर्क विल बी ट्राई टू सॉल्व एज मेनी इक्वेशंस एज यू कैन। मतलब इससे डाउट क्लियर होता है। अगर इफ यू आर नॉट प्रैक्टिस, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, अगर इसके आपके कंसेप्ट थोड़े से कच्चे हैं, so it will be little difficult for you going forward। Okay, so try to solve as many as problems। किसी चीज, सी यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, देयर इज नो डिफाइंड पाथ, मतलब ऐसा बताया नहीं गया है कि सिर्फ ऐड ही करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, you have to choose what is easy for you and then follow that। Okay, so that was your doubt, I hope I have cleared it। Okay, uh, let's go to the next example। तो yeah, cleared, great। So see, Sahil's age is 23 years, more than half of the age of Sangram's age. 5 years ago, the sum of their ages was 55 years. Find their present ages. Now see, this looks a bit complicated, but it is not. Now we have to go step by step. Okay, so first of all, we have to read the complete question. That is, Salil's age is 23 years, more than half of the Sangram's age. 5 years ago, the sum of the ages was 55 years. Find their present age. तो यहाँ पे first thing we have to understand is there are two persons here, right? First one is Salil, second one is Sangram. Okay, now since we have two persons, we can assign two variables to them। So मान लो कि let Salil's present age be x, मतलब सलील का जो अभी का एज है that is x, और संग्राम का जो अभी का एज है that is y। Now Salil's age is 23 years more than half of the Sangram's age। इसका मतलब क्या होता है सी,
मतलब सलील का जो एज है दैट इज 23 ईयर्स मोर देन द हाफ ऑफ संग्राम्स एज। मतलब यहाँ पे सी एक्स इज ग्रेटर, मतलब सलील जो है वो बड़ा है। सलील बड़ा है, कितना बड़ा है वो, मान लो कि अभी संग्राम का एज y है तो y डिवाइडेड बाय 2, y डिवाइडेड बाय 2 यानी कि दिस इज हाफ एज ऑफ संग्राम, राइट। y बाय 2 इज हाफ एज ऑफ संग्राम। तो संग्राम के हाफ एज में जब हम 23 ईयर्स ऐड करेंगे, सो इन दैट केस वी विल गेट द एज ऑफ सलील। क्लियर। सो y बाय 2 प्लस यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिए, सो व्हाट कैन बी पुट हियर, यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम इन दिस ब्लैंक ब्लैंक स्पेस, it can be 23 or it has to be 23. Okay, so x is equals to y by 2 plus 23. This is our first equation, students. Okay, see how we are forming the first equation. And if you see, we have got our first equation in the first line itself, right? मतलब यहाँ पे संग्राम्स एज पे जो है हमारी पहली लाइन खत्म हो रही है, एंड वी आर गेटिंग आवर वेरिएबल्स एज वेल एज आवर फर्स्ट इक्वेशन इन द फर्स्ट लाइन. नाउ वी नीड सेकेंड इक्वेशन एज वेल, राइट. So second equation के लिए we will refer to the remaining lines. So 5 years ago the sum of the ages was 55 years. Now 5 years ago, try to understand the thing. See, I know this is first time for you. आपने इसके पहले इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किए हैं, आई होप आपने नहीं किए हैं. आप नाइन्थ में हो, यू आर कमिंग अक्रॉस दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई नो दैट. बट दिस दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट मेक्स यू थिंक एंड दैट मेक्स यू ग्रो. ओके, सो ऐसा नहीं करना है कि सर इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मेरे से नहीं होगा. अगर आपसे ये मतलब इफ यू थिंक लाइक दैट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड. ओके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, नाउ यू डोंट हैव एनी आइडिया, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं मोस्ट ऑफ उसमें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का एक पार्ट रहता है. यू माइट हैव गिवन स्कॉलरशिप एग्जाम्स, नवोदय एग्जाम्स एंड मेनी अदर एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड्स एंड ऑल. सो उसमें भी ये पार्ट रहता है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यू हैव टू ट्राई एंड गेट अंडरस्टैंड. मतलब I think I'm very good at these things. So if you have slightest of doubt, you can immediately ask me. Okay, don't take this as a light. मतलब चलो अभी ये एक चैप्टर तो एक एक प्रैक्टिस सेट ही तो है, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है. नहीं समझ में आया तो भी चलता है, बाकी का कवर कर लेंगे. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेट योर एवरी कंसेप्ट क्लियर अबाउट दिस चैप्टर. ओके, सो ऑनेस्टली टेल मी, do you understand how we formed the first equation, how we get this equation, x plus y by 2 is equals to 23? Okay, Kadambari has got it. What about you, um, Vedant and Ayush? All right, fine. ठीक है, समझ में आया आपको. Now what is second statement? Second statement is 5 years ago the sum of the ages was 55 years. नाउ 5 years ago मुझे बताओ कि सलील का एज क्या रहेगा. सलील का आज का एज अगर x है तो 5 years ago ऑब्वियसली उसका जो एज है दैट वुड बी x-5. आज के एज में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो सो दैट विल बी, या दैट विल बी द एज ऑफ सलील 5 years ago. संग्राम का एज क्या रहेगा, y-5 रहेगा. सो इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन क्या बनेगा. 5 years ago the sum of their ages was 55 years. What will be the equation? ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, ये वैल्यू यानी कि यहाँ पे आएगी, और ये जो वैल्यू है y-5 वाली वो यहाँ पे आएगी, राइट. सो सी x-5 मतलब सलील का एज 5 साल पहले का, प्लस संग्राम का एज 5 साल पहले का. अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो वो आता है 55. So we can simplify this. X plus y minus 10 is equals to 55. So x plus y is equals to how much, students? X plus y is equals to
65. Great. So 65, right? So we have two equations now. First equation is this, second equation is this. Now the main question comes. Which method will be easy for you to solve this example? Elimination method or substitution method? Just think about it. It is okay if you give the wrong answer. Which method is useful for you? Substitution method, राइट सब्सटीट्यूशन मेथड वाई बिकॉज हमने पढ़ा था ना सब्सटीट्यूशन मेथड में कि हम या तो x की या फिर y की वैल्यू निकालते हैं फिर उसे दूसरे इसमें रखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास पहले इक्वेशन में ऑलरेडी x की वैल्यू हमें मिली है राइट इट इज इन द फॉर्म सो अगर हम इस x की वैल्यू को एज इट इज सेकंड इक्वेशन में रख दे सो वी विल गेट आवर क्वेश्चन वी विल गेट आवर आंसर ओके सो मैं बाकी का जो यहाँ पे कचरा है ये साफ कर देता हूँ दिस इज ओके या नाउ सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 65 इट इज यूजफुल फॉर अस तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो ये वाली सो y बाय 2 प्लस 23 प्लस y इज इक्वल्स टू 65 अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लो मुझे y प्लस 26 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 130 अब ये कैसे हुआ सी sorry it should be it is not 36 my bad it is 46 मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया दो से डिवाइड और दो से सब्ट्रैक्ट कर लिया सो 2 multiplied by 23 is 46 and 2 multiplied by y is 2y and this 2 common goes to here and it becomes 130 so 3y plus 46 is equals to 130 right 3y is equals to 130 minus 46 and y is equals to 130 minus 46 is I think it is equals to maybe 84 yeah it is 84 so 3y is equals to 84 y is equals to again 28 right so देखो क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या जबकि इन्होंने एलिमिनेशन मेथड यूज की है यहाँ पे ओके इन्होंने एलिमिनेशन मेथड यूज की है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज की है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट ही आ रहा है राइट सब्स्टिट्यूशन मेथड या सो now to summarize what we have learned today okay the question still remains y की वैल्यू 28 है तो अभी हमें x की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो x की वैल्यू क्या आएगी 37 आएगी तो what we can say Salil's present age is 37 years and Sangram's present age is 28 years this is very important statement हमें अगर क्वेश्चन वर्ड में पूछा है तो आवर आंसर शुड बी इन वर्ड आल्सो ओके पर्सनली मैं क्या करता हूं मान लो कि you have done everything correctly you have formed the equations you have solved the equations but you have not written the answer like this Salil's present age is 37 years and Sangram's present age is 28 years so अगर मुझे 5 में से मार्क्स देने हैं even if you have done everything correctly I will give you 4 marks why because ये जो लास्ट का जो लाइन है that is very important ठीक है हमें बताना पड़ेगा कि जो पूछा गया है क्या पूछा है हमें व्हाट आर देयर एजेस उन दोनों के एजेस क्या है सो वो हमें बताना पड़ेगा सो कीप दिस हैबिट राइट एवरीथिंग एडिंग वन एंड टू सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू और ये सब चीजें लिखनी है जब मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ाता हूँ आई नो दैट but you have to write all those things okay so whenever you write in the examination you write everything that is given in your book okay you have to solve like this all right students so to summarize this we have learned substitution method first and then we had some brush up on elimination method then we learned word problems ये सब चीजें हमने सीखी वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है पहले तो हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं एंड देन वी सॉल्व दोस इक्वेशंस एंड देन वी गिव द आंसर्स इन words right so that is it so in the next class we will take a few of the examples from practice sets and your doubts if any try to solve as many questions as you can from your book okay
So see you in the next class. All right. Chalo. Bye bye. Good night. See you soon.